Right, beta. So the cold chain system in the process of immunization, actually by definition, what is cold chain system? It is the way by which the vaccine reaches from the manufacturer to child at the proper time. And it means if this is the site of the manufacture of the vaccine, this is the point A where the vaccine is manufactured, and this is the child who have to be, vaccinated. So the way by which the vaccine reaches from the manufacturer to the child at the proper time, this way is called cold chain system, right? And it has got two important things. One is the chain chain logistic, and number two thing is the manpower. Chain logistic and manpower. Chain logistic, that the transportation should, man logistic is actually sorry, not man logistic, chain logistic. Chain logistic is referring to the safe sufficient transportation from manufacturer to the child, and it not only includes the transportation but also the storage, obviously, because when you are transporting the vaccine from the site of the manufacturer to the child, so in this way, in this path, there should be chain logistic. That means there should be the sufficient sources to transport, and during the time when you are transporting it, you should have sufficient sources and everything in which you can possibly store the vaccine, right, without damaging it. And then is number two, the manpower. For example, the availability of the standbys, availability of the electricity, right, to uh, safely store the vaccines in the refrigerators at the particular temperature, right? So I hope you are now clear with this thing, that what is cold chain system? It is the way by which the vaccine reaches from the manufacturer to the child at the proper time. And two things are important in this. One is the cold chain logistics and other is the manpower. चेन लॉजिस्टिक में क्या आ जाता है? दो चीज़ें आ जाती हैं. एक है ट्रांसपोर्ट और उस दौरान वैक्सीन को स्टोर करना अच्छे से, ठीक है, स्टोरेज. एंड द मैन पावर में आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी. अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो ना ट्रांसपोर्ट हो पाएगी दवा, ना स्टोर हो पाएगी इलेक्ट्रिसिटी. और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो स्टैंड बाय होना चाहिए, ताकि हम अपनी चीज़ को स्टोर करके रखें एक ख़ास टेम्परेचर पे और वो डैमेज ना हो, ठीक है. अच्छा, this cold chain system, this pathway include, firstly it starts with the manufacturer obviously, and then the end terminal is delivery, यानी कि बच्चे के पास पहुंचना, ठीक है, वैक्सीन का. So it starts with the manufacturer, and if we particularly talking about Pakistan, so from manufacturer it goes to the Islamabad airport, and from there it goes to the federal store in Islamabad. Then it goes to the provisional store in Karachi, then to the divisional store Sakhar, and then to the district store Sakhar, Taluka store Sakhar, and then to the EPI center. And EPI center is responsible for delivering the vaccine to all the needy people, or the child at the proper time. Let's go a little ahead, beta. Just a second. Right after that, comes another thing, that is VVM. Let me tell you what is VVM and what is its significance, by the way. VVM, it's actually the vaccine vial monitor. Let me tell you what does it mean. Beta, if let's suppose this is an ampule of the vaccine. This is an ampule of the vaccine. Let's suppose this is cap of the vaccine, right? And you use the syringe, and with the syringe you take the vaccine out,
and to the needle, right? So this is actually the ampule of the vaccine. और इस एम्प्यूल पे या तो इसकी कैप पे या तो नेक पे एक टैग लगा हुआ होता है, या कैप पे या नेक पे एक टैग होता है, उस टैग को हम कहते हैं VVM, वैक्सीन वायल मॉनिटर. एंड दिस tag is more like this, a circle and a square inside it. This is said to be the tag. What tag? Vaccine vial monitor. This is the tag which is present on the cap of the ampule, or on the neck of the ampule. And as the name indicates, it is the monitor of the vaccine viability. This tag will tell you that if the vaccine is properly treated at a particular temperature or not. This tag will tell you that this vaccine is usable or not. This tag will tell you what is the viability of this vaccine. This tag will tell you if this vaccine has to be discarded or it can be used. It is fresh, it is new, and all good. How? Let me tell you. I cannot tell you so many things about this, but at least what I know is this tag, before the vaccine is treated with a particular temperature, it is light in color, but it is temperature sensitive. When you provide heat and high temperature to this vaccine inside this, the color of this tag becomes darker, right? And this will indicate, okay, your vaccine is now ready and it has been treated at the sufficient temperature. And the color of the tag will tell you, okay, finally your vaccine has been treated at the sufficient temperature and your vaccine is ready to be injected. Again, a tag is present on the cap or the neck of the ampule of the vaccine, and this tag is said to be the vaccine vial monitor. This is the monitor of the viability of the vaccine. ओके, मैंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि क्या होता है एक्चुअली बेटा, अगर ये टैग फ़र्ज़ करें, ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है. ये टैग अगर लाइट कलर का है तो आप क्या कहेंगे कि अभी जो इसके अंदर वैक्सीन मौजूद है, जो दवा मौजूद है, वो अभी रेडी नहीं है, उसको अच्छा टेम्परेचर पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया. और अगर इसका कलर जो है वो डार्क हो तो आप समझ जाएंगे कि ओके, दिस वैक्सीन इज़ रेडी एंड द वैक्सीन present inside this ampule has been treated under the specific treatment and treated under the specific temperature and is now ready for being injected. So the vaccine vial monitor is a circle with a small square inside it, printed on the product label or attached to the cap of the vaccine, and this are on the tube or to the neck of an ampule, right? Clear beta? So let's go a little ahead. एंड देन कम्स हाउ टू प्रोटेक्ट द वैक्सीन. वैक्सीन कैन बी प्रोटेक्टेड. सबसे पहली बात कि अगर जब आप वैक्सीन लगा रहे हों तो ना नीडल को, ना अपनी स्किन पे किसी किस्म का डेटॉल, किसी किस्म का डिटर्जेंट और स्प्रेट लगाने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि बेटा वैक्सीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है. वैक्सीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है. अगर आप स्किन पे फ़र्ज़ करें, या आपकी स्किन है, ओके, और यहाँ पे आपने कोई एंटीसेप्टिक लगा दिया वैक्सीन इंजेक्ट करने से पहले, तो वैक्सीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो तो बाहर ही मर जाएगा. हमने तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म अंदर ब्लड में पहुँचाना है ना, ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो उसके खिलाफ. ठीक है, इस तरीके से. स्टोरेज टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 2 डिग्री सेंटीग्रेड to 8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेफरेबल टेम्परेचर इज़ 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड. Protect all vaccines from the excessive heat and excessive sunlight. Especially protect Penta, TT and DT vaccinations from freezing. They cannot tolerate the low temperatures. Then comes few practical points you need to note, beta, that starting from this, 2 or more killed vaccines or killed plus live vaccine can be given simultaneously or at any interval. 2 किल्ड वैक्सीन या 1 किल्ड 1 लाइव वैक्सीन एक ही वक्त में दोनों दी जा सकती हैं डिफरेंट साइट्स पे. ठीक है, या फिर आप इंटरवल भी क्रिएट कर सकते हैं कि अभी आपने किल्ड वैक्सीन दे दी और कुछ दिनों के बाद आपने लाइव वैक्सीन दे दी. ठीक है, 2 or more live vaccines should be given simultaneously or should be given at least at the interval of 4 weeks. So या तो दोनों लाइव वैक्सीन एक साथ दे दें,
या तो आज एक लाइव वैक्सीन दे दें, फिर 4 हफ्ते का गैप दें और फिर दूसरी लाइव वैक्सीन दे दें, ठीक है। चलें। Okay, malnutrition is not the contraindication to vaccination. You can provide the patient with the vaccine. Local reaction to penta or tetanus toxoid increases if it's not given deep IM or is very cold. अगर आपका जो बेटा पेंटा और टीटी जो है ना, अगर इनको मसल में अच्छे से नहीं लगाया, आईएम अच्छे से नहीं की, डीप नहीं की, या फिर पेंटा और टीटी बहुत कोल्ड थे उस वक्त वैक्सीन, तो लोकल रिएक्शन शो होगा। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर इंजेक्टिंग टीटी और पेंटा, मेक श्योर इट इज़ इंजेक्टेड डीप आईएम, it is injected deep IM or is not very cold. Right. Last thing beta in this topic is the adverse effects following the immunization. It is an untoward medical condition which follows the immunization, and which does not necessarily have the causal relationship with the usage of the vaccine. अमूमन क्या होता है आपको पता है, जब आप वैक्सीन इंजेक्ट करते हो, बच्चे को देते हो या किसी को भी, तो उसके बाद क्या होता है कि एक माइल्ड इन्फेक्शन तो होता है, ठीक है, वो भी लाइव वैक्सीन में खास करके, और ये तो वैक्सीन रिलेटेड हो गया ना, ज़रूरी नहीं है, does not necessarily have the causal relationship with the vaccine, and this infection may be due to some other causes. If let's suppose you provided the patient with a particular vaccine and later he developed the fever, and it is not necessary that this fever is due to vaccine, it may be due to the malarial infection, yeah, and it does not have any relationship with the vaccine. So let's talk about some types of the AEFI, that is the adverse effects following immunization. Let me tell you. Yeah, specific types of the adverse effects following immunization, AEFI. One is the vaccine product related reaction. जैसे कि आपने कोई वैक्सीन दी और उस वैक्सीन की वजह से, उस वैक्सीन के प्रोडक्ट की वजह से कुछ रिएक्शन जनरेट हुआ। जैसे कि जब आप डीटीपी लगाते हैं ना, तो एक्सेसिव लिम्ब स्वेलिंग हो जाती है। तो ये इस वैक्सीन, ये जो डीटीपी वैक्सीन है ना प्रोडक्ट, ये इससे रिलेटेड रिएक्शन है। अब आप कोई और वैक्सीन लगाएं, लेट सपोज आप टेटनस टॉक्सॉइड लगाएं, तो लिम्ब स्वेलिंग नहीं होती, और अगर आप डीटीपी लगाते हो तो एक्सेसिव लिम्ब स्वेलिंग हो जाती है। तो ये खास वैक्सीन प्रोडक्ट जो है ना, उससे रिलेटेड रिएक्शन जो हो, तो उसको हम कहते हैं वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड रिएक्शन। फॉर एग्जांपल डीटीपी से एक्सेसिव लिम्ब स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, और टीटी से नहीं होती। Another type is वैक्सीन क्वालिटी डिफेक्ट रिलेटेड रिएक्शन। अगर वैक्सीन की क्वालिटी में कोई डिफेक्ट था, उसकी वजह से कोई रिएक्शन हो जाए, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन है, उसको कम्प्लीटली किल करके दिया जाता है। अगर फ़र्ज़ करें मैन्युफैक्चरर ने उसको कम्प्लीटली इनएक्टिवेट नहीं किया और आपने वैक्सीन दे दी, तो बच्चे को क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा और वो पैरालिसिस हो जाएगी। क्या होता है बेटा कि मैन्युफैक्चरर क्या करता है, पोलियो के वैक्सीन को कंप्लीट ट्रीटमेंट देता है और हाई टेम्परेचर देता है, और हाई टेम्परेचर देके उसको कंप्लीटली इनएक्टिवेट करता है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर ये करने में फेल हो जाए और आपके पास जो वैक्सीन आई है उसके अंदर जो पोलियो मौजूद है वो कंप्लीटली इनएक्टिवेटेड नहीं है और आप उसको इंजेक्ट कर देते हो, तो जाहिर सी बात है बच्चे को फिर वो पोलियो हो जाएगा, और माइल्ड इन्फेक्शन नहीं तो टिपिकल कंप्लीट पोलियो होगा और इवन पैरालिसिस हो जाएगी। तो ये तो वैक्सीन की क्वालिटी का डिफेक्ट है ना, उसकी वजह से रिएक्शन हुआ है ना, तो उसको हम कहेंगे वैक्सीन क्वालिटी डिफेक्ट रिलेटेड रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शन। इम्यूनाइजेशन इंजेक्शन लगाते वक्त कोई एरर हो गया, जैसे कि आपने प्रॉपर जो है वो सैनिटाइजेशन हो गई है, प्रॉपर हाइजीन नहीं रखी, तो उस वक्त ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय द कंटामिनेटेड मल्टीडोज वायल, या ऐसा हो सकता है ना कि एक ही सिरिंज से और एक ही वैक्सीन दो लोगों में इस्तेमाल करना, मल्टी डोज करना। आप अगर एक सिरिंज यूज़ करेंगे, आपके पास एक वैक्सीन है, ठीक है, और आपके पास एक सिरिंज है, ठीक है, और ये बच्चा ए है, बच्चा बी है, इसी सिरिंज से आपने ये वैक्सीन उठा के इसको लगा दी, इसी सिरिंज से ये वैक्सीन आपने उठा के इसको लगा दी, तो जाहिर सी बात है इससे कंटामिनेशन तो होगी ना। तो ये इम्यूनाइजेशन एरर है ना, इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शन होगा ना। तो फ़र्ज़ करें कंटामिनेशन होगी और हो सकता है कि सेम सिरिंज यूज़ करने की वजह से इसका इन्फेक्शन इसमें चला जाए, ठीक है। सो दिस इज़ नंबर 3। एंड देन द नंबर 4, इम्यूनाइजेशन एंजाइटी रिलेटेड रिएक्शन। दैट इम्यूनाइजेशन के बाद बहुत सारे लोगों को एंजाइटी भी होती है
or they are really worried about that कि what's going to happen. For example, vasovagal syncope in an adolescent following vaccination, it happens actually. Most of people are really they are worried about this. So due to anxiety, this happens, vasovagal syncope. So it is immunization anxiety related reaction. And lastly is the coincident event. For example, fever after vaccination and the malarial parasite isolated from the blood. ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई कि आपने पेशेंट को वैक्सीनेशन की और वैक्सीनेशन करने के बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर हुआ और फीवर ख़त्म ही नहीं हो रहा। आपने तो यही सोचा होगा कि फ़ीवर हुआ है, ओके वैक्सीनेशन के बाद वैसे भी फ़ीवर होता है लेकिन फ़ीवर ख़त्म होना चाहिए, अब जो फ़ीवर ख़त्म ही नहीं हो रहा। फिर जब ब्लड में देखा तो क्या मिला, मलेरियल पैरासाइट मिला। ये तो कोइंसिडेंट हो गया ना, ये कोइंसिडेंट हो गया, ठीक है। सो दिस इज सेड टू बी द कोइंसिडेंटल इवेंट एंड द फीवर इज़ नॉट ड्यू टू द वैक्सीनेशन एंड ड्यू टू malarial parasite. And this is all about beta the detailed lecture on your EPI, that is the expanded program of the immunization. And I hope you understood everything. If you have any question beta, you can ask me anytime, anywhere. Thank you so much. Class dismissed.